हायर वॉशिंग मशीन, उसको हमने सेमी वॉशिंग मशीन का टाइमर लगाया है। ये वॉश टाइमर, ये स्पिन टाइमर, ये बजर। हमने इसमें 2 डोंगल स्विच लगाया है ताकि वॉश, ड्रेन और स्पिन के टाइम ये बटन काम करे। हमने वायरिंग किया है। ये 2 वॉश मोटर है, ये मेन सप्लाई, ये बजर, और इसमें ड्रेन और स्पिन इसी टाइमर से होगा। तो हम अभी वायरिंग हमने कर दिया है और हम इसका फिट करेंगे। हमने इसका वायरिंग कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने कपड़े डाले हैं, पानी डाले हैं। हम चालू करेंगे। वॉश करने के लिए दोनों बटन को ऊपर करना है। ये 25 मिनट का टाइमर है। वॉश हो रहा है। हमने ज़्यादा कपड़ा नहीं डाला ट्रायल के लिए। इसमें हमने बजर लगाया, बजर। अभी वॉश हो रहा है। हमने इसको कन्वर्ट इसलिए किया है, पानी का प्रॉब्लम है तो इसको हम ऊपर से डाल सकते हैं। पानी नीचे गया कि ले ला है? पानी दे भी रहा है ऊपर से।
इसको पानी ऊपर से डालना है। हमने सारा इनलेट वॉल्व सब निकाल दिया हमने। जैसे सेमी को जैसे इस्तेमाल करते हैं इसको भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वॉश कंप्लीट हो जाएगा तो वैसा आवाज़ करेगा। इस तरह से जब वॉश कंप्लीट हो जाएगा आवाज़ बताएगा। अभी हम इसको ड्रेन करेंगे। इसको नीचे करना है, इस टाइमर के थ्रू ही ड्रेन होगा। अभी ड्रेन हो चुका है। स्पिन के लिए इसको नीचे करना है। इसी ही टाइमर से ड्रेन और स्पिन दोनों भी होगा।
तरह से हमने कंप्लीट किया है सब कुछ। तो हमने इस फुल्ली कंप्लीट से मैंने कन्वर्ट किया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जैसे टाइमर रुकेगा वैसे स्क्रीन रुक जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।